Yes, thank you, Saranj. So basically, we'll be taking your 3D designing workshop. So we have Shriyan Kalra, I am Abhay Mangla, and we'll have Jaskirat Singh soon. So we three will be taking your 3D designing workshop. So like, मैं कौन हूँ? Like, who am I to take your workshop? Okay, next you can join. I'm just giving my intro. So for the people who are seeing me for the first time, I'm Abhay Mangla. I am the vice president at the Byte Club. So I am co-founder at E.co and I'm like more into CAD designing and 3D modeling. So I'll be taking this workshop. Last year I trained over 100 plus students on graphic designing, 3D designing, and uh, design thinking. And this year as well, I'll be conducting your pitching and 3D designing workshops. So I hope मजा आए. ठीक है. Last year we had a lot of fun, and इस साल के लिए we have like upgraded the workshop, so we'll be having more fun. Okay. So we'll just wait some time. I hope सबने वो अपने पीसीज में वो कर रखा है, ब्लेंडर इंस्टॉल कर रखा है. एक बार Yes. 100 से दो. Um, सारांश अपने फोन से ज्वाइन करा हुआ है. यू हैव लैपटॉप राइट? मतलब एक मिनट एक ओके, नो वरीज. वाज नॉट मी एंड अक्षय कुमार. ओके, great. So Arish, I guess your mic and cameras are not working, right? So I hope Blender is working at least. Great, amazing. What do we have? Let's see. We have Ivan, we have Rakesh Chasani. So yeah, cameras on कर लो. It will be a great interactive session. ठीक है? So we'll be having a lot of fun. बातें करेंगे and we'll be learning as well. We'll start at 11:30 sharp. तो जितने भी होंगे, will not waste your time and we'll start without wasting time. लास्ट ईयर किस किसने अटेंड करी थी? मीनाक्षी ने करी थी एक तो, आई रिमेम्बर. बाकी सारे नहीं हैं. हार्दिक ने करी थी, आई रिमेम्बर. कुछ कुछ फेसेस तो मेरे को याद. ओह, स्वराज ने की थी. ग्रेट. बढ़िया. ग्रेट. So let's start. Okay. So getting into 3D designing, right? Basically, I'll be covering a little bit of theory before we get started into 3D designing. Okay. So what is 3D designing is like a normal question, but my like my question is why 3D designing? क्यों opt in करा है for 3D designing? What do you expect? एक एक करके माइक ऑन करके बोल सकते हो. वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स, तो हैंड रेज की ऐसी जरूरत नहीं है. Anyone who would like to answer? Can you please repeat the question?
Why have you opted in for the 3D designing workshop? 3D डिजाइनिंग क्यों सीखनी है? Uh, I want to learn 3D designing because I want to make animations. Great. Um, anyone else? Chat box में भी चलेगा if your mics are not working. So I can 3D design models for my projects. Great. For fun. Okay. चलो बढ़िया है. तो fun के लिए तो मैं भी करता हूँ. I have to opt for 3D designing for upskilling. Great. It's really great for the portfolio. Recently, yes, like 3D designing is emerging as a career as well. To bring my ideas to life. Great. For career. Great. So, what we use 3D designing is for, like, what we can do is we can make custom toys and robots. जैसे किसी ने बोला कि आई वांट टू मेक प्रोजेक्ट्स, नक्श ने बोला आई वांट टू मेक एनिमेशंस, तो जैसे कि मैंने डोरेमोन चूज करा, डोरेमोन इज वेल नोन, तो डोरेमोन जैसे कार्टून जो हैं उसमें थ्री डिजाइन होते हैं कैरेक्टर्स एंड दे आर रिक्ट टू डू द मोशन दे हैव टू डू. तो डोरेमोन अगर चल रहा है तो दे आर एनिमेटेड इन द ब्लेंडर. देन जो भी आपके एसी चल रहा है, फॉर एग्जांपल वी हैव लैपटॉप, वी हैव फोन, we have any design that we have to build in real life. So engines, any inventions, design, mechanical designs, ये सब 3D में होता है. So if you have to visualize something, you can design it in 3D. Okay. So um basically we have two major choices, CAD and Blender. But before hopping on to that, I just want to discuss that we are clear with the term 3D. 3D का क्या मतलब है? Anyone who would like to describe? I know it's easy, but कोई भी बताना चाहता है तो. Three-dimensional. I think we can hold, or like we can feel, not like Yes, 2D, which is flat on a plane surface. three-dimensional. Okay, 3D means three dimension. So let me explain how do we work here. So this year we have a whiteboard as well. So I'll be trying to explain on that. So is the board visible? Uh, Yes, so basically, when we draw a line, this has some length, right? So yes. this is one dimension. It has one dimension of length. One dimension of length, right? But when we add another dimension to it, एक और डायमेंशन ऐड कर दी हमने, ब्रेथ या विड्थ, विड्थ ले लेते हैं हम, विड्थ हमने ऐड कर दिया. तो इसमें अब कौन से डायमेंशन है? पॉइंट या तो इधर 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 हो सकता है, राइट? या तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. ओके. सो वी हैव अनदर कोऑर्डिनेट इन सेकंड डायमेंशन जहां पे पॉइंट जा सकता है. बट अगर मेरे को बोलना है एक पॉइंट इधर है हवा में, बोर्ड में है ही नहीं, बाहर है, तो व्हाट विल वी यूज? हम कौन सा कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे इसके अंदर? वी हैव लेंथ, वी हैव विड्थ, व्हिच कोऑर्डिनेट विल ऐड इनटू दिस सिस्टम? Depth, depth या height. यस. तो हम इसमें एक हमने 2D करा with length and width, and in 3D we add one more dimension to it of height या depth भी बोल सकते हो. Why depth? Mathematically we express this as x, x coordinate, y coordinate and z coordinate कि थोड़ा ease of use रहे. So we use x, y and z coordinate system, xyz coordinate system to place any point in a space. तो कहीं भी space में कोई point है, we use xyz system.
So basically, what we do is with 3D designing, we assign these points a place. We add a point and we give it a space and we join them. कि ऐसे ऐसे शेप बनेगी. तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोन. ओके, सो हम पॉइंट्स एलोकेट करेंगे, जो भी उसके वर्टिसेस होंगे, उसके एजेस होंगे, वो सारे पॉइंट्स हम मैप करेंगे इन कैड सॉफ्टवेयर एंड विल कनेक्ट देम सो दैट जब हम उसको हम फाइल ट्रांसफर करेंगे, कहीं प्रोजेक्ट करेंगे या कोई विजुअल फॉर्म करेंगे, ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स आर देयर ओनली. इतना क्लियर है? So, allotting these points, we have two major ways. We have CAD and Blender, which we'll be exploring right now. CAD and Blender. Okay. So, coming back to the presentation. So, for CAD, you can think of it as an engineer's tool. जैसे कि what I do is I am a lot into robotics. जो एटल लैब में like fine arts के लिए आता है, they must have seen me working in the lab, right? So what I do is before I build a robot, just so that I can visualize how it will look in real life, I open a CAD software, I put in values, mathematical values, कि मेरे को इतनी लेंथ चाहिए, इतनी ब्रेथ चाहिए, इस डायमेंशन का ये चाहिए, and then I extrude it. I draw something, I extrude it, I draw something, I like delete it, and उसके बाद जो मेरी figure बनती है ना, that is called CAD. Like I can show you some robots. So this is a CAD. This is a CAD. A robot I have designed in CAD for an event. This is another robot that I've designed for an event. So अगर मेरे को कोई design है that I've thought हाँ यार ये अच्छा लग सकता है. So what I do is I hop into the CAD, I design it so that I can visualize कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, कोई चीज एक दूसरे से टकरा तो नहीं रही. And then I build it in real life. I can also 3D print this as well. But what we like, why we have Blender then? किसी को बताना है about Blender? Like, what's the why do we use Blender then? अगर CAD से हम 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं. For animations, Yes. So basically, we have you must have used modeling clay, right? Modeling clay के पे वो crafts उसको मोल्ड करना आसान है. तो अगर कोई भी आपको कोई लाइक टॉय बनाना है, ओके, ट्रीज बनाने हैं, कोई भी ऑर्गेनिक शेप बनानी है, तो यू यूज क्ले मॉडलिंग यूज करते हो, राइट? सो ब्लेंडर इज लाइक अ डिजिटल क्ले, जिसको आप मोल्ड करके जो चीज आपको बनानी है आप वो चीजें बना सकते हो. एंड यू कैन यूज इट फॉर एनिमेशन, यू कैन यूज फॉर गेम. सो व्हाई CAD is for precision. We use it for solid shapes and basically functional designs like, oh, yes. So it's like Blender is like a digital play. So why CAD? CAD is for precision. तो उसमें बहुत ज़्यादा numerical values होती है. It's very mathematical. We have solid shapes which we can 3D print. We have a functional design. Okay. So we have gears, we have joints. तो पूरा सब कुछ functional होता है. That compliance with each other. ऐसे कोई rough estimate करके shape नहीं बनती उसमें. While in Blend, तो like you can use Tinkercad. Tinkercad I guess सबने सीखा होगा एट classes में. So instead of drawing, you can build boxes, place boxes, and build shapes. So आज we'll be covering the basics of Blender. So we'll be using Blender as a Tinkercad. जैसे हम Tinkercad में objects को manipulate करते हैं, वैसे ही हम Blender पे objects को manipulate करेंगे. Then we have Onshape जिस पे मैंने अपने डिजाइन बना रखे हैं. So it is for complex illustrations जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल चीजें हैं, जैसे कि as you can see here we have complex gears, motors and all the things. मेरे पास like I was working on a project, तो like you can see complex चीजें होती हैं, springs. तो उन सबको डिजाइन करना CAD में is pretty easy. Okay. So ये वाला डिजाइन है. So it's pretty easy to design this in CAD. Then coming back to the presentation. So why Blender?
ब्लेंडर जैसे मैंने बताया इट्स फॉर ऑर्गेनिक शेप्स, तो जैसे कि कोई आपको ह्यूमन बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, या एनी ऑर्गेनिक शेप, कोई भी आइडिया आ रहा है यू कैन टेल, कोई भी। चैट बॉक्स में यू कैन राइट, चैट बॉक्स आई एम सीइंग। Donut, yes, donut is very popular example. Buildings, okay, great. Anything else? Game characters, yes. So all the games you play, like Minecraft or mm, wait, Roblox. Valorant, Roblox, all those characters are designed in 3D. They're like their shapes are designed in 3D, and then they're converted into rigs to move them. Yes, we can design structures as well. So basically, in Blender we can use for organic shape. We can after giving shapes, हमारे पास characters आ गए, हमारे पास पूरा environment बन गया. We can use animation to add life to that object. So we can make a person move, we can make it jump, we can make it dance. जो कराना है उसे करा सकते हो. Okay? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स फ्री. ठीक है, तो लाइक अगर किसी को भी कहीं भी यूज करना है तो दे कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट. बहुत यूजर फ्रेंडली टूल है. लाइक even the basic a person starting from scratch uses blender, and even at industry level Disney also uses blender. So it is a really adaptive platform which anyone can use. So like as I mentioned, it's like digital clay. So you can sculpt, paint, animate, you can build anything you want, right? So how do you choose between Onshape and Blender? Like we'll not be covering CAD this session, but we'll be covering Blender. तो कोई भी design idea है, how do you decide कि I have to make it on Blender or on Onshape? सोचो, we just discussed. Directly आंसर नहीं बताया, but we just discussed. Depending on the output you need, yes. Depending on the applications, अभी हमने ऑर्गेनिक मॉडल्स, इंजीनियरिंग मॉडल्स डिस्कस करे थे, राइट? तो अगर हमें कोई ऑर्गेनिक मॉडल बनाना है जिसमें बहुत सारे कर्व्स हैं, राइट? तो वी यूज ब्लेंडर. बट अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, जैसे कि कुछ समथिंग फ्लैट, समथिंग क्यूबॉइड, समथिंग लाइक रिजिड, मैकेनिकल, तो हम टॉनशिप यूज करते हैं बिकॉज इट्स रियली प्रिसाइज, राइट? सो ब्लेंडर इज यूज्ड फॉर गेमिंग एसेट्स, कि आपने स्किन्स बनाई, वेपन्स बनाई, फोर्टनाइट एंड जैसे रोब्लॉक्स गेम्स हैं आपकी, राइट? देन वी हैव वीआर एंड एआर. सो वी कैन डिजाइन द वर्ल्ड्स, डिफरेंट 3D वर्ल्ड्स में आप गेम्स खेलते हो, तो दैट ऑल आर मेड ऑन ब्लेंडर. You can use for like digital artists also use Blender for painting and making 2D animation. किसने वो देखी है, क्या कहते हैं, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स? एक बार हैंड रेज कर दो. सो so many students. तो बेसिकली दैट वाज आल्सो डिजाइन ऑन ब्लेंडर. अब आप बोलोगे उसमें तो शैडोज नहीं फॉर्म होती, उसमें तो 2D ड्राइंग्स है. तो ब्लेंडर also gives us an option where we can animate 2D designs. तो I can draw multiple frames and उसमें से एक animation में build out कर सकता हूँ, which can be built into a film. So that entire movie was designed by different artists using different styles of like drawing.
on Blender to build animation for different characters. तो like पहले क्या होता था, you use a 3D model, you design a 3D model, उसको आप rigging करोगे, you will learn about rigging. उसको आपने rig करा, उसको structure दिया, and you animate an entire movie out of it. It is a copy paste format. Okay. So what did they do is that they made sketches, they made drawings. Like you have different Japanese comics as well, right? So they are also using drawings to animate movies out of it. तो इन्होंने भी ये वही मेथड यूज करके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में दे एनिमेटेड द कैरेक्टर्स. So as someone said कि for career I want to learn 3D designing for career skill building. So recently this has like really bloomed because it is like coding mostly अब AI कर रहा है, not completely replaced, but mostly AI कर रहा है. 3D design is one of the surviving skills जो काफी हद तक I won't say कि AI नहीं कर रहा है, but it is still a surviving skill that is like almost AI proof. Okay, तो इसमें काफी ज्यादा फ्यूचर स्कोप्स हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं. You can do industry level jobs. You can like डिजाइनिंग कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो, गेम डिजाइन कर सकते हो. सो लाइक इट हैज वर्सेटाइल यूज. तो अभी तक कोई भी जर्नी है, लाइक अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. जो भी अभी हमने थ्योरी करी, आई नो इट वाज क्वाइट बोरिंग, रेस्ट ऑफ द सेशन वोंट बी, बट इट वाज एन थ्योरी सो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई कवर्ड. ओके. तो किसी को कोई भी डाउट्स है तो दे कैन रेज हैंड्स. कोई भी डाउट्स है, डम से डम डाउट भी केटर करने को मैं आई एम हियर. कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है. यस अक्षय. नो वरीज. किसी को कुछ नहीं डिस्कस करना, किसी को कुछ रैंडम एग्जांपल आ रहा हो लाइक आर वीएफएक्स, यस यस, वीएफएक्स आर मेड इन ब्लेंडर. सो व्हाट दे डू इज, डू यू नो अबाउट ग्रीन स्क्रीन? ग्रीन स्क्रीन तो पता ही होगा. सो व्हाट दे डू इज कि जैसे कि मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करी अपनी, राइट, एंड उसमें मैंने ग्रीन बैकग्राउंड पे करा. तो व्हाट आई डू इज आई रिप्लेस द ग्रीन स्क्रीन with the animation I design on 3D. तो अगर मैंने कोई 3D ब्लेंडर में एक वर्ल्ड डिजाइन करा, ओके, सो आई प्लेस माई सेल्फ देयर, एंड दिस इज द बेसिक VFX. दिस इज द बेसिक VFX वी डू. अब जैसे कि फेमस मूवीज लाइक VFX वाली कौन सी अभी रिसेंट मूवी आई है, आई कैन रिमेम्बर इज कोई मार्वल की, मार्वल यूजेस अ लॉट ऑफ VFX, राइट. अभी रिसेंटली कोई लोकी सीजन आया था, लोकी सीजन 2, राइट. तो उसमें बहुत ज्यादा VFX था. दे वर ऑल रियल लाइफ एक्टर्स वर्किंग इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. सब कुछ 3D था, एवरीथिंग अराउंड देम. इवन जो गेयर्स वो यूज करते हैं टू लाइक कट कॉस्ट, इवन और स्टूडियोज यूज दैट गेयर्स आउट ऑफ 3D. तो yes, we use VFX Blender for VFX as well. Any more questions? कुछ भी कुछ शेयर करना है? अगर किसी को याद हो तो लास्ट ईयर also I mentioned the example of Spider-Man into the Spider-Verse, right? So last year what happened was, just out of context, I just wanted to share कि last year what happened was that when I uploaded the session on YouTube, मेरे पे लाइक उसमें डिटेक्ट कर लिया था वो सीन यूट्यूब के सॉफ्टवेयर ने, एंड इट लिस्टेड इट एज कॉपीराइट. तो पूरे वर्कशॉप पे कॉपीराइट आ गया था. तो दिस टाइम आई वोंट बी शोइंग एनी क्लिप्स, सो आई जस्ट मेंशन्ड इट डायरेक्टली. तो ऐसे कोई भी रैंडम चीज शेयर करनी है जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, यू कैन गो अहेड, कैन शेयर. किसी ने लाइक आई एम सेइंग 3-4 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द 3D डिजाइनिंग वर्कशॉप लास्ट ईयर एज वेल. तो किसी ने कुछ आगे प्रोग्रेस कराओ, कुछ डिजाइन कराओ बिफोर वी लाइक बिगिन विद द वर्कशॉप, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग विद एब्सोल्यूट स्क्रैच. कुछ भी नहीं आता, विल टीच यू एवरीथिंग.
ओके। तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रायर नॉलेज। तो अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रखा है, वांट टू शेयर, तो दे कैन शेयर। लाइक अभी मैं शेयर करूंगा, देन दे कैन शेयर। ओके। सो जस्ट सो दैट यू हैव नो, जस्ट सो दैट यू नो कि लाइक मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आई विल बी शेयरिंग फ्यू ऑफ माय डिजाइन्स जो मैंने डिजाइन करे हुए हैं। बेसिकली आई एम मास्टर इन कैड। कैड इज माय फेवरेट, ठीक है। ब्लेंडर मेरा इतना फेवरेट नहीं है, आई बी ऑनेस्ट। But I also know Blender, so I'll be taking the workshop. So this is a space settlement I was designing for a recent competition known as ARSSDC. So उसमें आपको requirements देते हैं what we need for a space settlement, and उसके according I designed this model to like accumulate humans in space. तो आपको अगर इसके अंदर रहना है तो you can live in it. Okay. So this was my I am a co-founder at e.co. So this is my project, Smart. Smart के बारे में भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो this was the entire design, mechanical design that I had designed using springs, plungers, coins, magnets. तो ये सारा मैंने CAD में like I had a drawing, मैंने एक sketch बनाई, and then I made it into 3D to understand कि यार कौन सा component कहाँ पर आएगा, right? जैसे कि I participate in RoboCop every year, like I've been participating in RoboCop from last 2 years. तो रोबोकॉप के लाइन फॉलोइंग डिजाइन्स बनते हैं, जिसमें अ बॉट बेसिकली फॉलोज अ लाइन। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट इटरेशंस होती हैं बॉट डिजाइन की। तो दिस इज वन ऑफ द डिजाइन, दिस इज अनदर डिजाइन आई डिजाइन। देन फॉर एन इवेंट आई हैड टू लाइक डिजाइन अ कंसोल, लाइक गेमिंग कंसोल। तो उसके लिए आई यूज कैड। ओके। सो आई गेव इट वाटर कूलिंग। पीछे मैंने वाटर कूलिंग के चेम्बर्स बना दिए थे, सो दैट यू कैन डू वाटर कूलिंग हियर। एंड स्पॉटिफाई का एक वो आया था ना, थिंक करके, दैट गेट्स प्लेस्ड इनटू योर कार्स। तो मैंने इसके ऊपर वो भी अटैच करा था सो दैट इट लुक्स गुड। देन इसके लिए मैंने कस्टम लाइक ergonomics के साथ एक वो कंट्रोलर भी डिजाइन करा था। these all designs are my original designs, ठीक है। इसमें से कोई भी लाइक मैंने किसी आर्टिस्ट का उठाया नहीं है। ओके। सो what do you think about this design? Should I have made this on Onshape, or I should have made it on Blender, and why? Anyone interested to answer? Random guess चलेंगे यार। I won't be judging, I won't be grading. You can just answer. मेरा ये डिजाइन है, ओके। दिस इज माय डिजाइन। इसको ये बेस्ट कहाँ पे बन पाता, इन ऑन शेप, यूजिंग कैड, और ऑन ब्लेंडर। किस पे ये बेस्ट बन पाता? Do we have the answers in chat box? नहीं। Is Can you CAD please repeat and the Onshape question? same? Yes. So be Onshape. Akshay says Onshape. Okay. Blender for view only and Onshape for real life use. Okay. Okay. So first of all, CAD and Onshape are same. So basically जैसे कि वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए यू कैन यूज आफ्टर इफेक्ट्स, यू कैन यूज फिल्मोरा, और काइन मास्टर होता है, वीमियो करके ऐप होती है। सो यू वी हैव मल्टीपल एप्स दैट ऑन व्हिच वी कैन डू वीडियो एडिटिंग, राइट? सो फॉर कैड डिजाइनिंग वी हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑनशेप, we have Tinkercad, we have Fusion 360, we have Autodesk, SolidWorks. So we have a lot of softwares we can use. So like most prominent is Tinkercad and Onshape because it's free. We have FreeCAD as well. I saw students in ATL lab working on that. So that's also a great software. Okay. So basically, yes, Hardik is right. Blender for view only and Onshape for real life.
तो अगर मेरे को इसे डिजाइन करके प्रिंट करना होता, तो this would have been great for on chip, क्योंकि on chip में you have to like have dimensions, like ये 5 सेंटीमीटर breadth है, ये 2 सेंटीमीटर height है, तो we need dimensions, तो that on chip is best for that. But as you can see ना, इसमें काफी सारे curves हैं, ये kind of organic design है, because इसमें बहुत सारे meshes हैं, you are able to see that. ये बहुत ज़्यादा कर्व्स है, दिस इज वो डिजाइन वाज इंस्पायर्ड बाय दैट माउस, आई गेस MX मास्टर करके, वो जो माउस होता है ना, ऑर्गेनिक, जो साइड माउस होता है, तो आई डिजाइन्ड अ कंसोल डिजाइन फ्रॉम दैट. तो यहाँ पे 4 बटन्स, जहाँ पे ऐसे करके आप पकड़ सकते हो, एंड वी हैव जॉयस्टिक्स इन द सेंटर. तो दिस इज मोर ऑफ एन ऑर्गेनिक डिजाइन. मेरे को ऑनशिप में बहुत सारा टाइम लगा than it would have been than it would have taken in Blender. Blender is like easier to manage with complex geometries. Like इसमें काफी simple geometries हैं, right? इसमें we have all simple geometries. But अगर कुछ complex आता है, then it's easier for Blender to handle that, until and unless it doesn't has dimension. मैं क्लियर? किसी को कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ गेट क्लियर कि कब इन मेकिंग जजमेंट कि कब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है. तो इट विल गेट क्लियर लाइक धीरे धीरे. तो अभी तक कोई डाउट्स किसी को? एनीथिंग? देन आई हैव वन मोर डिजाइन. वेट. सो दिस इज एरावत. तो दिस इज अ डिजाइन आई मेड फॉर NSS स्पेस सेटलमेंट, एंड मैंने लास्ट ईयर भी शो करा था. सो दिस लास्ट ईयर था, आई डोंट थिंक सो रिजल्ट आए थे, बट दिस हैज वन थर्ड इंटरनेशनली, तो नासा के इवेंट में दिस वन द थर्ड पोजीशन इन आवर कैटेगरी. देयर ओके, आई थॉट किसी ने मैसेज वो करा. सो तो गेस करो कि ऑन विच सॉफ्टवेयर इट वाज डिजाइन. गेस. Blender. ब्लेंडर. ओके. एनी मोर? I am talking about design, okay? Trick question है. CAD for precision, Autodesk Fusion, Blender. Okay. तो अब थोड़े से अच्छा। फन होगा, because it is neither designed on Blender, neither on Onshape, Fusion, किसी में भी नहीं. It is designed on Tinkercad. So this uh, you basically Blender helps you visualize it. So what I did was I designed entirely this like entire settlement was designed. This was like for last year, and this Bella Vista one is for this year. So we have a different design. So this one was for last year. तो इसमें जो सारे components थे, we had 3D designed it, and we had placed it in Tinkercad, and sorry, तो इसको हमने टिंकरकैड में पूरा डिजाइन करा, सो दैट वी कैन विजुअलाइज, एंड वी सॉ दैट इट वाज लुकिंग ग्रेट. हमें लाइक वी डिडंट नीड एनी डायमेंशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वी कुड हैव लाइक इजीली मेड इट देयर एंड लाइक जैसे था वैसे ही. तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने उसे ब्लेंडर पे अपलोड करा. इट लुक ग्रेट. थोड़े से टेक्सचर्स डाले, एंड वी रेंडर्ड एन एंटायर एनिमेशन आउट ऑफ इट. तो एज यू कैन सी रिंग्स घूम रही है, राइट? रिंग्स अंदर के वो एक स्ट्रक्चर्स, वो सारा घूम रहा है. तो वी rigged the entire model so that we can produce this animation. So you don't worry, you will be also learning. बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ओके? जिन्होंने लास्ट ईयर करा था दे नो कि कितना फन एंड कितना क्रिएटिव यू कैन गो. मेरे को अभी भी याद है, लास्ट ईयर आई गेस हार्दिक ने कराया था, कि लास्ट ईयर एनिमेशन के बाद क्रिकेट का मैच बनाया था, जिसमें बैट बॉल को हिट करके स्टेडियम के बाहर जा रही थी बॉल. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने बस इतना बताया था कि दिस इज हाउ यू मूव अ बॉल,
एंड उसने पूरा सीन एनिमेशन सीन डिजाइन कर दिया था, अ बॉल being played as a cricket match and उसको ball get like going outside the stadium. So it's easy, बहुत easy है, you can design it. You can use any software as Tinkercad on Shape. If time allows, हमारे पास 3 workshops हैं and each of just 1 hour each, तो we'll try to cover most of it. हम will try कि हम ब्लेंडर अच्छे से करें. We had in poll in the group as well कि क्या करना है. And we saw that people were interested in Blender. So don't worry, we'll be covering Blender. So we have Shriyan Kalra. Shriyan Kalra will be guiding you through Blender, and he will be telling you how we'll be navigating, how to open Blender, how to open a general screen. So Sara, everything will be covered from scratch, and he will carry over. मेरा स्क्रीन शेयर करना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है Your screen is visible, but आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. अभी बेटर है Yes, I believe सबको audible है ना? सबको audible है तो it's great, right? So you can start. तो फर्स्टली जब Shian, you can start with an introduction. पहले introduction दे दे. Who are you? And आई एम then श्रेयान कालरा आई एम इन क्लास 9th C एंड मुझे बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स अच्छा लगता है एंड मुझे ऑन शेप भी अच्छा लगता है उस पर लाइक डिज़ाइनिंग करना मैं थोड़ा सा 3D प्रिंटिंग के अंदर करा हुआ है एंड मुझे ब्लेंडर भी आता है तो इसमें स्टार्टिंग जब हम न्यू करते हैं एक ब्लेंडर प्रोजेक्ट को उसमें होता है क्यूब ये क्यूब पहले मूविंग जिसके जिसके पास माउस है वो मिडिल माउस बटन क्लिक करके इसे ऐसे वो कर सकते हैं व्यू सब ये कर पा रहे हैं सब ये कर पा रहे हैं ऐसे मिडिल माउस बटन से मूव एंड जो टच पैड पे है um, जिनका माइक वगैरह नहीं वर्क कर रहा, they can like raise hands, chat box में लिख सकते हैं. So that we just know कि you are there, you are working with us, and it will be easier. We can move on fast and cover more things. तो ठीक है मैं आगे करता हूँ नाउ पैन करने के लिए शिफ्ट एंड मिडिल माउस दबाना होता है टू पैन अराउंड एंड स्क्रॉल व्हील जूम इन जूम आउट करने के लिए ये सारे इसकी बेसिक कंट्रोल्स हैं नाउ ये जो क्यूब है इस हम पहले और ऑब्जेक्ट्स कैसे डालते हैं नहीं पहले ये क्यूब जो है इसे हम मूव कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट जी से जब हम जी दबाते हैं हम इसे इधर उधर इस डायमेंशन के अंदर मूव कर सकते हैं माउस दबा के एंड जहाँ पे हमें प्लेस करना है देन लेफ्ट क्लिक से उधर प्लेस कर सकते हैं ये कर पा रहे हैं सब या फिर इधर ये वाले टूल से इसे तो उससे मूव करना है जैसे ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है ये जेड पे मूव हो रहा है एंड ये वाई पे मूव हो रहा है देन एक क्यूब को रोटेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट आर इसे किसी भी लाइक डायमेंशन में रोटेट करने के लिए जब मिडिल माउस क्लिक दबा के रखते हैं तो इसे लाइक अगर तो हमें एक्स के उसके ऊपर करना है एक्स एक्सिस पे करना है ऐसे कर सकते हैं जेड पे करना है तो वो सिलेक्ट होकर हो सकता है एंड तो वाई पे करना है तो उसे वाई पे ऐसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं या फिर माउस को क्या हो गया है इसे ऐसे सिलेक्ट करके
जिस एक्सिस पे रोटेट करना है। मेरे पास जनरल नाउ अगर तो हमें इसे लाइक स्केल अप करना है या फिर बढ़ाना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं हम। इसका शॉर्टकट है एस, लाइक इसे स्केल करने के लिए। और तो हमें लाइक इसे जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है अभी, और तो हमें इसे क्यूबॉइड बनाना है तो हम इसे ये एक्स पे कर सकते हैं, इधर ऐसे जेड पे कर सकते हैं, एंड इधर ऐसे वाई पे कर सकते हैं। ये ऐसे इसकी बेसिक कंट्रोल है। नाउ तो हमें कोई और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालना है तो हमें ऐड क्यूब क्लिक करके You can do it from other way as well. तो लेआउट के पास you'll see ऐड का ऑप्शन, ऊपर ऊपर मेन्यू बार के पास you'll see ऐड का ऑप्शन. Can you see that, श्रियन? इधर इधर ऐड करके भी। हाँ, हाँ, तो यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो. तो नाउ ऐसे हम ऐसे डिफरेंट क्यूब डाल सकते हैं। तो अगर तो मैं ऐसे स्केल करूँ, हम्म, ये इसके बेसिक कंट्रोल्स हो गए हैं। तो लाइक ऐड से इधर हम ऐड कर सकते हैं, एम से मूव हो, जी से मूव होता है, आर से रोटेट हो जाता है, एस से स्केल होता है। ये इसके बेसिक कंट्रोल्स हैं। कोई डाउट्स? अगर क्लियर है तो यू कैन रेज हैंड्स, एंड कोई डाउट्स है तो यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स. एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स नहीं है? किसी को कोई डाउट्स भी नहीं है, किसी को क्लियर भी नहीं है? ग्रेट. हैंड्स तो रेज कर दो अगर क्लियर है. ग्रेट. नेक्स्ट क्या हैंड रेज आ गया? वी हैव टू हैंड रेजेस. 3, 4, 5, 4, राइट. Atik, are you with us? Great, great, great. तो चलो, वी आर डूइंग ग्रेट. तो यू कैन कंटिन्यू. हाँ, इसके अलावा अगर तो जैसे हमें कोई हम्म, इसमें सिर्फ हमें मैश यूज़ करना होता है अभी ऐड करने के लिए। So basically you can add different meshes.
Um, Shane, you can continue presenting. एक मिनट. Yes. So basically, you have to add different meshes and you can build around like that. तो जैसे कि हमने Tinkercad use करा था, right? Tinkercad में we were putting in objects and like merging them, placing them together. So basically, what you can do is you can build basic stuff. We'll be like using the edit mode as well really soon. But for now, because we want you to like be clear with the basics, थोड़ा मुश्किल होता है in the starting to navigate, to move around objects. So we would like कि आप like you can add different objects, different shapes को add करो, stretch them, mold them, जैसे भी करना है करो, and build something that resembles something. Like you can build a water bottle, या फिर कोई a हाउस pencil, um, ट्राई कर a सकते हैं, birthday लाइक cap बना डिफरेंट. सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, right? So you can build anything. So we'll give you 5 to 10 minutes time to design and we'll ask you to present. Okay? तो ऐसा नहीं है कि you'll कुछ नहीं करोगे and we'll let you go. Okay? So you can design whatever you want and after this अगर time बचता है तो I'll share something more as well. So everyone shall be back by I guess 5 minutes लेते हैं तो I guess 20 तक हो जाना चाहिए. 20 is fine. 20 ज़्यादा लग रहा है. 25 great है. So 25 तक you can design whatever you can, whatever you want, and उसके बाद we'll see a few projects. आपको WhatsApp group में भी share करने हैं your projects के screenshots, and then we'll moving on to lighting, scene setup, and like अंडरस्टैंडिंग ओबीजे की फाइल्स कैसे सेव होती है, फाइल टाइप्स वगैरह, तो वो सब हम कवर करेंगे. एंड इन हाउ टू चूज डिफरेंट शेप्स लाइक सिलेंडर, लेट मी शेयर. सो माय स्क्रीन इज विजिबल. यस. सो आई विल दैट. हाँ. तो बेसिकली you have this add option here. Is it visible? Add object. Yes. So what do we do is we go into mesh and here we have multiple options like cube, sphere, cylinder, torus. We can even add a monkey. We can add an entire monkey face. That is, it is a basic face in Blender. तो इसे भी ऐड कर सकते हैं. We can stretch him. तो अगर मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा क्यूट monkey बनेंगे तो like I can scale it vertically, I can scale it horizontally, I can scale it as however I want. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. Okay? तो I can do anything, I can rotate. तो different different objects को बस add करके like मेरे को इसको birthday बना celebrate करना है, right? तो मैं इसके ऊपर एक मैंने birthday cap लगा दी. तो monkey का birthday है. Okay? I know I have bad humor, but bear with me. तो uh, so we placed हाँ, great. तो जल्दी से cover this up. Um, I saw an interesting fact as well, which I'll be sharing, and we'll be covering. अरे मेरे कैमरा ऑफ है. Yes, and we'll be covering lighting. तो जैसे कि हमने देखा था कि we use Blender for rendering designs, rendering visuals, and क्या कहते हैं rendering scenes, right? And when you're clicking photograph, किसने अभी फोटोग्राफी की वर्कशॉप अटेंड करी थी? Yes. तो they must have told about lighting, right? लाइट तो इम्पोर्टेंट है ना, वरना फोटो कैसे लोगे?
हार्दिक डोंट लाई उसका गलती से हैंड रेस रह गया होगा, नो वरीज। तो बेसिकली when you are taking a photo, it's really important that you have light on. Light on ही नहीं होगी तो you can't take photo. So we'll be adding light into the scene, we'll be modifying it, and we'll be editing the object in the next class. So don't worry, हम वो भी cover करेंगे, we'll cover everything in our curriculum. Okay, is there a shortcut to ground the object so it touches the works? नहीं. Basically, uh, in Blender, you are working in an open space. ठीक है? Like, I know what you're saying. In Tinkercad, we have a workspace that's a flat base on which we can place objects and like place them differently. But in like Blender and Onshape, it's a free space. कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो. तो we don't have anything as such कि वो टच करे वर्क स्पेस के वो ग्राउंड को, because we don't have any ground. अगर I'll show, डाउट तो क्लियर हो गया, but just for reference, तो can you see this green line? This green line is our ground. तो ये एक्स एंड वाई वाला इज ग्राउंड, तो ये मंकी का फेस जो है अभी ग्राउंड के नीचे जा रहा है. तो वी डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक सो दैट कि हम ये लाइक इसको ग्राउंड से ऊपर लेकर आए. व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके ऊपर ही ले आए, लाइक मैनुअली. कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है. अभी तक वी आर गोइंग ऑन लाइक गुड पेस ना, कुछ दिक्कत तो नहीं. आई जस्ट फॉरगॉट द शॉर्टकट टू इंक्रीज द साइज. ओके, सो यार सर बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम इन ग्रेड 11th ओनली. ठीक है. देन सेकेंडली, yes, you can use the S option. और अगर कोई भी by chance key bind, I know it's key bindings are really overwhelming, but it is necessary in Blender, so that it is easy for all. किसी को key binds नहीं याद रहते like me, तो they can use it from the panel. तो अगर कभी भी भूल जाओ तो here you can see options, right? तो इसमें रोटेट का है, स्केल का है, मूव करने का है, ट्रांसफॉर्म करने का है. सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस है. तो यहाँ से भी इस पैनल से भी यू कैन एडिट, यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट. एनीवन हु विश टू शेयर देयर प्रोजेक्ट की किस पे वर्क कर रहे हैं वो, किसी को भी शेयर करना है. 1 minute, ओके. Isaac, you can share your project. हाँ, डन डन. यहाँ पे सबके बेस्ट है यार. यू आर लाइक, कितना टाइम हुआ है मुश्किल. वन वी हैव नॉट इवन completed 1 hour. Many students join pretty late, and in less than 1 hour you are working on Blender and designing objects, designing scenes, designing anything. It's awesome. जो भी बनाओगे it's pretty awesome. Okay, तो हार्दिक you can present. Okay, एक एक करके you can start presenting. I'll stop my presentation. एंड जो भी नहीं प्रेजेंट कर रहे, आई एक्सपेक्ट कि वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दे. ओके, आई गेस हार्दिक का लैब होगा. हाँ, नक्श यू कैन प्रेजेंट, विल गो इन ऑर्डर. Okay. Yeah. So here I'm trying to make a house.
हिंदी में बोल यार, यू आर ऑल चिल। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एक घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई हैव एडेड द डोर एंड एक क्यूब को सबसे पहले मैंने स्केल करके उसको एक्सट्रूड करा. उसके बाद एक क्यूब को उसको स्केल करके फिर उसको एक डोर जैसा बनाया है. एंड नाउ आई वाज एडिंग द विंडो. ग्रेट, ग्रेट। विंडोज, रूफ, मल्टी स्टोरी मेनली भी कर सकते हैं यार, पूरा लाइक ये कोन वाले स्ट्रक्चर्स वी हैव इन फॉरेन कंट्रीज, you can make a real estate building as well. So it's great. You can design whatever you want. Amazing. Great. जिसका SS ग्रुप में शेयर कर दियो, so that other students can also get inspiration. Now Atiksh का best project. मैं करूँ ना प्रेजेंट. हाँ हाँ, कुछ तो क्रेजी सा बना है, बहुत ज्यादा स्माइल आ रहा है, ओहो, ओहो। अरे शिट. अरे शिट, बिल्डिंग को क्या हो गया? शिट. शिट, मैंने बिल्डिंग के की फ्रेम्स नहीं डाले. शिट. कोई बात नहीं, 9/11 का रिक्रिएशन. कोई बात नहीं, ग्रेट जॉब। ठीक है। अब ये एसेट्स जो हैं आई गेस ब्लेंडर ब्लेंडर किट से उठाए हैं ना, तो इट्स ग्रेट। ब्लेंडर किट इज रियली यूजफुल, लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल एंड में कवर करा था, सो दिस ईयर आई थॉट कि स्टार्टिंग से ही you'll get hang of it, तो इट विल बी easier। तो जैसे कि इसने अभी बिल्डिंग पूरी डिजाइन नहीं करी, हार्दिक ने बनाया है। व्हाट्स दिस? क्या है? पोकेमोन बॉल, आई एम गेसिंग। हाँ, मैं पोकेमॉन बॉल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर क्रिकेट बॉल बन गई। कोई ना, आई गॉट द आइडिया। मैं वो उसको वाइट, जो है बीच में वाइट लाइन है, उसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहा था, पर हुई नहीं मेरे से। मटेरियल वाले सेक्शंस में यू कैन लाइक डू इट ऑन ऑल। हाँ, मटेरियल में यू कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, एंड जिनको नहीं आता दे डोंट हैव टू वरी, विल बी कवरिंग ऑल दिस। ओके, लास्ट ईयर हमने सारा कवर करा था। तो लाइक व्हाट डिड, जस्ट टू एक्सप्लेन अदर्स, अभी जो अध्यक्ष ने करा, अध्यक्ष पुल्ड आउट एन एसेट फ्रॉम रेंडर किट, he didn't design the plane or building. So, and he animated the keyframes according to how I wanted. So basically, the idea is that like we don't reinvent the wheel. हमें हर बारी जब कोई अगर कार बनानी है, तो we can directly place the wheel. हम बार बार व्हील को ही डिजाइन करने नहीं लगे। So what he did was he did smart work. उसने बिल्डिंग में टाइम वेस्ट नहीं करा, उसने डायरेक्टली किसी का और का मॉडल उठाया, he placed the building. उसने किसी और का मॉडल उठाया, he placed the plane, and उसने boom. तो that was pretty smart. And by the end of the session you will also be able to make such projects. तो जो भी ideas आते हैं दिमाग में, you can make them and render it. um, we have just 5-6 minutes left, तो तो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हार्दिक, यू कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग। ग्रेट, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। नक्श, एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ बोलना है? या मैं ट्राई कर रहा था, बट मेरा मटेरियल वाला कुछ चल नहीं रहा फीचर. मल्टी, इट डिपेंड्स ऑन द व्यू, कौन सा व्यू सेलेक्ट कर रखा है। एक सेकंड में कर दो। इज माय स्क्रीन विजिबल? नहीं, व्यू मैंने ठीक सेलेक्ट कर रखा है, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. देन इट मस्ट बी रेंडरिंग इशू, थोड़ा बहुत आता है, बिकॉज इट इज लाइक हाई प्रोसेसिंग वाला स्टफ ना, तो इट टेक्स टाइम। इट शुड बी फाइन वंस यू सेव इट एंड रीलोड। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, एंड देन इफ इट डजंट गेट सेव, इट्स लाइक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, नाउ विल बी कंटिन्यूइंग। सो यहाँ पे ना यू कैन सी
कैन यू मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। Yeah. So in the top right corner, you can see we have a camera, we have cone, we have light, and we have this Suzanne. I don't know what this. मैंने पहली बार read करा है इस monkey का नहीं. We'll call him monkey. ठीक है? तो basically what we have is कि we have different objects. जैसे कि अगर हमें render करना है तो cam we can go to ocean. So we can use this camera view and we can see कि object कैसा है. हाँ. So we can see कि monkey इधर है. Okay. So हम जो कैमरा के x and y coordinates हैं, we can put it so that the monkey is visible. रुको. As you can see, I'm just controlling XYZ. Transform tab से I'm controlling the XYZ of the camera and repositioning my camera so that I can capture this monkey. अब monkey मेरे frame में आ रहा है. Yes. Now I'll add light. अब मैं देखूंगा light कैसे आ. So light कहाँ पर है? अच्छा, point light. Yes. So light is coming from all direction. We have a point light here, I guess. Yes, we have point light here. We'll add a spotlight. Okay. So basically, जैसे कि आपने मूवी सीन्स में देखा होगा, we have multiple lights. एक after this you can shit. Okay. And जो नहीं कर पा रहे, will love कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में सेंड करो. तो जैसे कि यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स कि बहुत बड़े-बड़े कैमरा लाइट ट्रिक्स होते हैं. यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है. We have a lot of flood lights, right? तो बेसिकली इन ब्लेंडर आल्सो व्हेन वी आर लाइक डिजाइनिंग मॉकअप्स, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये फोन है, राइट? मेरे को इसकी ऐड डिजाइन करनी है, मेरे पास इसका कैड है. आई हैव नॉट येट बिल्ड दिस फोन, बट मेरे को इसकी स्क्रीन वो वीडियोस लेना है. तो जैसे कि यू मस्ट हैव सीन सैमसंग की वीडियो, नथिंग के वीडियोस, राइट? तो दे यूज ब्लेंडर फॉर दैट मॉकअप्स एज वेल. तो व्हाट दे टू डू इज कि वो जो एनवायरनमेंट है ना पूरा सेटअप वाला, जो फिल्म सेटअप लगता है, दे रिक्रिएटेड यूजिंग लाइट्स. तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लाइट है, तो आई एम मूविंग द लाइट सो दैट द मंकी इज विजिबल. मंकी के ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूँ. रुको, आई आई एम ट्राइंग कि कोई और फूड से और थोड़ी सी कम करते. सो यू कैन सी द शैडो विजिबल है मंकी की. तो बेसिकली यू कंट्रोल द लाइट सो दैट मिनिमम शैडोज विजिबल. जैसे कि अब मैंने इसको लाइट को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया. आई एम मूविंग द लाइट, तो कुछ कुछ पार्ट ही विजिबल है. आई कैन कंट्रोल ऑल दिस. मेरे को ज्यादा लाइट चाहिए तो आई कैन लाइक मंकी को मैं ब्लाइंड भी कर सकता हूँ. तो तो मैं आई कैन डू ऑल दिस. सो आई कैन एडजस्ट द पावर, आई कैन मूव द लाइट अराउंड. तो ब्लेंडर गिव्स अस ऑप्शन, जैसे कि कार्ड में वी डोंट हैव कैमरा, वी डोंट हैव लाइट. तो ब्लेंडर में वी हैव लाइट, वी हैव कैमरा, so that we can move around, we can capture stuff and like के डिजाइन एक्चुअल सीन्स जो रियल लाइफ में बनते हैं. तो अगर मैं कोई आउटडोर का सीन बना रहा हूँ, सो आई हैव दिस सन ऑप्शन. तो सन की तरह ये लाइट प्रोड्यूस करता है. आई विल जस्ट रिड्यूस द पावर. हाँ. तो you'll see कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म लाइट है जैसे सन से आती है. तो इट्स अ सनलाइट, वी हैव स्पॉटलाइट, एरिया लाइट, एंड वी कैन ऑल कंट्रोल कि कहाँ पे डायरेक्शन में कौन से कलर की. जैसे कि इफ आई वांट द लाइट कलर टू बी ब्लू, तो लाइट का कलर ब्लू हो गया तो हमारे कैमरे का भी कलर ब्लू हो रहा है.
तो जस्ट इंश्योर कि इस वाले मूड में हो आप, लाइक आई फॉरगॉट द व्यू, आई गेस हाँ, व्यू पोर्ट शेडिंग वाले मोड में हो आप, टू सी दिस. ओके, so it takes more rendering to like view the object in viewport shading. So अगर you are working with a scene, you are working with lights, you have to use viewport shading. Materials भी ऐड करोगे तो वो viewport shading में best visible होते हैं. So what I can do is like मैंने frame करा, मैंने light डाली, now I can click render and render image. तो ये फोटो खींच के दे देगा मेरे को monkey की. This is the image I generated of the 3D model. I can add multiple cameras all as well. कि मैंने where is camera? Yes. तो मैं कैमरा भी ऐड कर सकता हूँ so that I can view this from multiple angles. को बनाए. हाँ, तो ऐसे लाइक मैंने यहाँ से एंगल कर रखा है तो I can see the change. Okay, I can transform it. Wait. हाँ, फिर I can transform it XYZ to take a jawline check. Monkey का jawline check. तो we can add multiple cameras, we can add multiple lights, we can basically पूरा स्टूडियो बना सकते हैं हम ब्लेंडर में for click and like clicking pictures of an object जैसे रियल वर्ल्ड में होता है. तो बहुत रियल लाइक इमेजेस आती हैं. Then I discovered one more thing. So like in Tinkercad, um, जैसे कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमने बोर्ड पे डिस्कस करा था ना, राइट, कि इन ऑब्जेक्ट्स की still have कि when we are working with objects तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है that uses so like कोई भी ऑब्जेक्ट है, like we have a cube, right? ये हमारा 3D प्लेन है. We have a cube. We have a cube. ठीक है. तो how do you like गिव कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है कि ये क्यूब है, इसको कैसे दिखाना है. ओके, सो व्हाट डज इट डू इज कि ये पॉइंट्स याद रखता है. ये जो वर्टिसेस है ना, क्यूब की कितनी वर्टिसेस होती हैं, कोई भी बोल दो यार, बेसिक क्वेश्चन है. 8. 8. 8. तो बेसिकली इट स्टोर्स द डेटा ऑफ 8 वर्टिसेस, जो भी इसकी 8 वर्टिसेस है. ओ मैन. ओके. तो तो बेसिकली ये सारे 8 कोऑर्डिनेट्स के एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सेव करता है कि ये फॉर एग्जांपल 1,1,1 पे है, तो 1,1,1 पे है ये. तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट सेव करता है. सो जस्ट टू मैंने भी अभी रिसेंटली व्हाइल स्टडीइंग अ लिटिल बिट बिफोर द सेशन आई सॉ दिस कि मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव द शेप इन टिंकरकैड. ओके, या टिंकरकैड दिख रहा है सबको. तो व्हाट आई ये मैंने बस क्यूब डाला है, आई हैव डन नथिंग. मैंने बस ऐसे क्यूब लिया एंड क्यूब ऐड कर दिया. ठीक है. आई एक्सपोर्टेड इट इन ओबीजे. ओबीजे में मैंने एक्सपोर्ट करा एंड यू नो टिंकरकैड टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इसे. यस, सो वी हैव दिस ओबीजे फाइल. ओके, just you can try this for your design as well. कुछ इशू हो गया. आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, बट दिस इज द फाइल वी हैव डाउनलोडेड.
अब क्या कर सकते हैं हम, लाइक इफ आई चेंज द फाइल टाइप टू txt टू सी इस फाइल के अंदर है क्या, व्हाट ऑल इज इट स्टोरिंग। जैसे कि वर्ड होता है तो उसमें टेक्स्ट स्टोर होता है, तो इस 3D फाइल में व्हाट वी आर स्टोरिंग। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या दिख रहा है? 8 vertices. 8 वर्टिसेस, एंड सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, एक्स वाई एंड सी, कि कौन से कोऑर्डिनेट पे कौन सा वो है हमारे पास। विजिबल है? एंड Yes. अदर, Yes. एंड वी हैव कोऑर्डिनेट्स की कौन से फेसेस को कनेक्ट करना है। अब आपके पास वर्टिसेस आ गया, ओके, बट यू डोंट नो कि कौन सी लाइंस हैं, कौन से बस एजेस हैं, एंड किस किस पॉइंट को कनेक्ट करना है। क्या पता मेरे को कनेक्ट ही नहीं करना है, एक एज मेरे को चाहिए ही नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? सो वी हैव दिस फेसेस, कि 12 फेसेस का डेटा है ये, कि कौन से फेसेस को कनेक्ट करना है, एंड यूजिंग edges, vertices and faces, it connects the object and build a cube। तो जैसे कि हमारे पास एक वो है क्यूब, तो उसमें सारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस का हमारे पास डेटा है। देन वी हैव द डेटा ऑफ फेसेस, डिफरेंट फेसेस। तो अगर कोई भी आप कोई, लाइक दिस वाज अ रियली बेसिक एग्जांपल, तो जैसे कि इट वाज फॉर अ क्यूब, सो कोई भी ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हो, मे बी अ स्फीयर, सिलेंडर, एनीथिंग, एंड उसमें यू कैन चेक कि ओबीजे फाइल को txt करके क्या क्या वर्टिसेस डेटा आ रहा है। फन था ना? बोर तो नहीं करा एंड में? चलो, नो वरीज। um any more doubts before we end the session? कोई भी doubts, you can raise hand, you can add in chat box में check। okay, 678524643 what is this? Okay, we'll tell your maths teacher। तो uh, चलो ये सारा हो गया। Any doubt, Bhaiya, you have to trust me, okay? Can you explain how to add light and change color? Okay, so basically you go into the Blender में यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, you have to go into this add menu में you choose, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन होता है, yes, you have light। तो कोई भी लाइट ऐड कर सकते हो, स्पॉटलाइट, एरिया लाइट, सनलाइट, पॉइंट लाइट। दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन वापस से, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। वी हैड जस्ट टाइम लेफ्ट, तो आई थॉट कि इस वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो यू कैन ऐड एनी लाइट एंड प्लेस इट, जैसे ट्रांसफॉर्म टूल्स हमने बताए थे। एंड अबाउट द कलर, कलर में यहाँ पे व्हेन यू आर मॉडिफाइंग द लाइट, तो यू कैन सी अ बल्क डेटा। तो डेटा में जाकर यू कैन चेंज द कलर and brightness of the light। तो viewport shading मैं खोल दूंगा, yes। तो viewport shading में you can see colors change हो रहे हैं according to light। तो अगर मैं blue light मारूंगा तो blue object आएगा ना, तो it is showing according to that only। okay, how do you make animations or videos from Blender? We'll be covering that in the third session। अगर like you are really interested, so you can see last year के recordings, we covered that in the last two sessions। तो लास्ट ईयर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स यू कैन रेफर टू दैट। बाकी विल बी कवरिंग। इन शॉर्ट बताऊं तो व्हाट वी डू इज, मैं एक बार दिखा देता हूँ। um, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास एक ना टाइमलाइन होती है इन विच वी कैन डिजाइन की फ्रेम्स। तो जैसे कि मैंने एक की फ्रेम आई, यू हैव अ शॉर्टकट ऑफ आई फॉर अ की फ्रेम। तो मैंने एक की फ्रेम इधर बनाया, मैं इसकी कैप को जंप कराता हूँ उनको। भैया की फ्रेम बनाते हुए जब मैं आई दबाता हूँ की फ्रेम डलता है नहीं, तो फिर कैसे लाइक वो हटाते हैं इशू? मतलब समझ नहीं।
एक बार रिपीट करो डाउट। जब मैं आई दबाता हूँ की फ्रेम नहीं डलता, इंस्टेड वो चैनल्स का ऑप्शन आता है। हाँ, वो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट मोड में हो। एक यू चेक कि आप ऑब्जेक्ट मोड में हो, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑरेंज आउटलाइन आ रही होगी ना, देन ओनली यू कैन ऐड अ की फ्रेम। अगर आप बस ऐसे करोगे आए, तो वो आए नथिंग सिलेक्टेड टू द की, ऐसे आएगा वो। नहीं, मैंने सेलेक्ट करके किया था। चलो मेरे को दिखाना, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं, अब चल रहा है। चल रहा है ना? ठीक है। सो जैसे कि मैंने एक कैप का की फ्रेम डाला है इसमें, अब मैं इसका एक की फ्रेम डालूंगा ऊपर, जिसका कैप जंप कर गया। भैया ठीक कौन है। सी की दबाने से वो सेव होता है फ्रेम? आए, आए। ठीक है। मैंने इसकी कैप ऊपर करी, मैंने 12 सेकेंड्स पे एक की फ्रेम डाल दिया आए। एंड 24 सेकेंड्स पे, हाँ। तो अब क्या होगा, कैमरा में यू कैन सी इसकी कैप ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो इसकी कैप जंप कर, तो यू कैन रिपीट दैट, you can repeat it several times, कुछ भी देना है animation, so you can add keyframes, you can animate it, give it positions, position दी keyframe बनाया, position दी keyframe बनाया, we're covering theory regarding around it as well, जिससे आप Disney like animations भी डिजाइन कर सको। This was just the core कि कैसे कर सकते हैं। Any more doubts? कोई भी doubts है? Thank you for sharing last year की recordings। Last year I guess redesigning मैंने नहीं लिया था। लास्ट ईयर बाइट में फरन भैया एंड जसकिरत भैया थे। हाँ, एट क्लब की मैंने ली थी। आई लाइक टुक द फर्स्ट 2-3 वर्कशॉप्स, बट आई हैड टू गो समवेयर, तो यस। फरन भैया टुक ओवर। तो एयरटेल की देख सकते हो, एयरटेल की वाज रियली नाइस। उसमें काफ़ी अच्छे से कवर करा था। दिस ईयर वी हैव थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज एज वेल। वी हैव 1 आवर के 3 सेशंस। लास्ट ईयर हमारे पास 2 आवर्स के आई गेस 6 सेशंस थे, तो बहुत ज़्यादा गैप टाइम का कंस्ट्रेन है यहाँ पे। तो विल बी कवरिंग लिमिटेड चीज़ें, बट जो भी हम कराएंगे दैट विल बी लाइक इनफ एंड गुड टू गो। ओके, so next session we'll be starting with editing the objects. So Jaskirat bhaiya will be there. He could not join us today. So wo he'll carry on the workshop. I'll be also there too to explain बीच में, तो I भी साथ साथ में will be taking your session. तो I hope today's session was good. सब अपने डिजाइन जो भी डिजाइन करा है दे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, and we'll meet you in the next session. ओके। Bye. बाय। Bye थैंक यू bye. भैया, बाय। बाय बाय। Bye bye. I hope अच्छा सेशन था, we were on good pace. मजे Okay. आए। फिल्म मेकिंग वर्कशॉप के बाद शेयर कर सकते हैं डिजाइन। क्या मतलब? डिजाइन लाइक जो नेक्स्ट वर्कशॉप उसके बाद शेयर कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, आराम से। जस्ट इंश्योर कि भेज दो, सो दैट अदर्स को भी लगे यार हम भी ट्राई करें। इट जस्ट ग्रुप इफेक्ट, ठीक है? यू लर्न टुगेदर। ओके, तो शेयर कर देना याद से। यू ऑल कैन लीव। बाय। बाय। एनी डाउट्स? नॉट मी, सरांचन, कृतिक राणा। चलो, लेट्स एंड द सेशन। बाय।